Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HT Reacts. Welcome back to the channel. बडीज़ कैसे हैं आप सब? ठीक हैं. तो काफ़ी टाइम बाद यानी एक मंथ हो गया होगा मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू को हमने करण कुंद्रा के इंटरव्यू पे रिएक्ट किया था पिंक विला पे. और उसके बाद हमने पार्ट 2 करना था लेकिन टाइम भी नहीं मिला और हमारे माइंड से भी निकल गया. कमेंट सेक्शन में एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें याद करवाया और फिर याद तो करवा दिया, अब मुझे लिंक ना मिले क्योंकि मुझे याद ही नहीं था मैंने ये वीडियो रखा कहाँ है अपनी ड्राइव पे. तो थैंकफुली उन्होंने हमें जो जो हम भूल गए थे इंटरव्यूज़ उन्होंने हमें इंस्टा पे शेयर किए और हम आपके लिए उसका पार्ट 2 लेकर आ गए हैं. फाइनल पार्ट है. वैसे यहाँ पे मैंने टाइटल दिया जी करण कुंद्राज पिंक विला इंटरव्यू पार्ट 2, लेकिन जो एक्चुअल टाइटल है वो बता देता हूँ कि 14 ईयर जर्नी. उसके बाद है जी तेजस्वी प्रकाश स्पेशल मैसेज, लाइफ आफ्टर बिग बॉस 15. तो इसमें से कुछ चीज़ें हमने देख ली थी. बाकी देखते हैं रिमेनिंग पार्ट. 3 2 1 एंड गो. In the past, you've spoken about that you've had communication problems, and even on Big Boss, I remember one moment you had broken down and you had said, "I wish मेरे पास बचपन में कोई बात करने होता तो शायद मैं ये situation में नहीं होता." You had a sibling, right? I have 3 elder sisters. मैंने बिग I'm बॉस the youngest. 15 फॉलो ही नहीं Yeah, किया था and तो so मुझे याद नहीं है ये. when I think 2001 is when my mom left for the United States, because that was a situation where financially we were very downtrodden. And that's when my mom decided that she's going to restart her career, go give her exams, become a medical practitioner in the US and support the family. At the same time, my elder mom sister, doctor? Meenu, she decided that she's going to move to Canada, do her MBA again and start doing a job over there. Dad was like either we are going to give it a last shot, whatever काफ़ी we have, the एजुकेटेड factory फैमिली है and पूरी. everything, or we wind this up and again we also go to a better place where we will be more comfortable money wise. So and my sister, the elder sister, had already married and she was already a doctor in the States at that time. These Doctor? were formative years for me. And I'm very attached to my mother. I'm very attached to my elder sisters. And my dad, he's an extremely hardworking and he's an extremely driven person. Yeah. And he has done everything Goal for oriented his होंगे ना, family and focus. nothing for himself. Yeah. I have not seen my dad buy a single thing for himself or have expensive cars. सबके or, डैड ऐसे ही होते हैं भाई. wear an expensive सब कुछ watch बच्चों को ही देने. plan holidays and हाँ. and what Same- are the same- works? same Whatever situation he's done it for his kids or his wife. And हाँ. the wife is the same. She's never done anything for herself. मतलब अपने लिए कभी कुछ नहीं लेना. So हमारे फादर का भी यही my सीन है. dad was in अपने that लिए कुछ नहीं situation लेना लेकिन also. बच्चों ने जो कह दिया वो He लाजमी tried लेके to देना है. revive everything and कई बार all तो the कहने की भी gossip ज़रूरत नहीं that पड़ती, the stock मिल जाता है. market, this, that, whatever थैंक happened. यू पप्पा जी. And so कुछ होता था ना तो या तो डैड सॉर्ट करते थे. अच्छा अगर नहीं हुआ तो मदर तक आती थी बात, या बड़ी दीदी तक आती थी, या उसके बाद या उसके मेरे तक कोई प्रॉब्लम आई घर में सबसे छोटे हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम नेवर यूज्ड टू रीच मी. So suddenly, all ये जो जितने लोग थे मेरे वो चले गए. जिनके सर के नीचे हाथ के नीचे मेरा सर होता था, they had to leave for me. So that our family again becomes strong and all of that. And suddenly I was very confused. Now you're very young at that time, right? You're 16 or 15 or whatever, and suddenly you're making mistakes. You're going out and you want to spend money but you don't have money, and you've seen so much and suddenly it's not there. So it was a very tough time for me. And at that time if I had to go back and talk to myself, I would have explained to myself. I'm not an irrational person. Yeah. But I think everybody goes through this time. Yeah. So I made a few mistakes and all of that. But I हर think कोई my अपनी personal लाइफ growth में was किसी ना very किसी पॉइंट पे मिस्टेक्स तो करता है. उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है. She said something very interesting which I agree with her. She said Karan is learning a lot about himself also. This is after all came out of the show. The Yeah. Karan Kundrra that a lot of people knew outside is not the same Karan Kundrra anymore, and he loves that. Yeah, because see again, What as I has said, changed? a lot has changed. होते हैं यार, मतलब जो लाइफ में अकेला रहा ना उसका एक आउटर शेल होता है जो हार्ड होता है. दिल बड़ा सॉफ्ट होता है. See, I've had an image. Yeah. Everybody thought I'm this arrogant, strict, angry person. जो मतलब Angry young man type. school वाला जो वो होता है. And then people realize that he's not. Like they start making fun of me. And so Big Boss is a situation where you have to face the reality of yours. You cannot pretend.
You get to know what you like, what you dislike. You get to know कि आप कितना stoop करोगे किसी चीज़ के लिए, आपके ethics क्या हैं, कैसे टाइप के लोग आपको पसंद आते हैं, कैसे टाइप के लोग आपकी वाइब हैं, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है. क्योंकि बाहर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हम काम कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो इन अंदर आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी रियलिटी क्या है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, किसके साथ आपकी दोस्ती बनेगी, कौन लोग आपको अनएथिकल लगेंगे, और सब कुछ क्लियर हो जाता है. सो you come out if you've let that show, if you're open. The first thing when you about any therapy is that you accept it. So if you've accepted that this show is going to change a lot about you and give you the reality check about you, then you start taking in all that, absorbing it, and yeah, you come out more sure about yourself. Big Boss has made me self-realization. One thing that you told me also before you entered the house, I asked you, are you hoping to find love in the house? I remember you said no. Not at all. अरे बिग बॉस में कौन जाके प्यार करेगा? So cliche. मतलब मैं खुद बोलता था कि यार नहीं ये सब नहीं है, हो जाता है, वो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है. But it did happen, and how beautifully it happened, It's so weird that she's been around for such a long time. Yeah, like I've been along together. such a long time. We've had common friends. Yeah. We never met. We met once Rashmi के साथ on Ladies vs Gentlemen. And ठीक है, hi hello हुआ, and she was busy in her own book. Rashmi Desai. Okay. But I got curious from that day itself. And ठीक है, like she's very cute girl, very honest. वो Ladies vs Gentlemen हमने देखा था. But that's it. But that's what I'm trying to say. We've been around in the same industry, same sort of friend circles, never met. I sometimes I believe that I had to meet her on Big Boss. She had to come on the same, and both of us we were like, यार मैं मेरे को भी 9 साल से बोल रहे हैं, वो कह रही मेरे को भी 5 साल से 7 साल से बोल रहे हैं, यही Big Boss का सीजन करना था हम दोनों को. And this was the first time नहीं करना करते दोनों का ही ऐसे हो गया. I think I would say it's destiny. Yeah. It's definitely destiny. Made for each other. इतने सालों से. And it was the right time and the right place to be in a situation where they test you, they test your relationship, they test your integrity, they test your ethics, they test everything, and you pass through all of that, a simulation which is called Big Boss, and then you understand that you really love this person, and it's vice versa. So yeah, such a nice word. You use simulation. It is really a simulation. It's definitely a simulation. But she also said that you haven't popped the marriage question as yet. When are you doing it? Popped the marriage question. She's एक काम करना, next interview that you do with her, वो बहुत शानी है, वो मेरे ऊपर डालती है सब. हाँ. अब मैं डाल रहा हूँ. I'm doing this with her also. करो उसके साथ करो. मैं राजी हूँ भाई, जब मर्जी करो. बोलना कि I have left it on her. ठीक है, because every interview ना she goes and say अरे Karan. हाँ, because I'm the elder, so वो शाड़ियाँ निकल जाती है. आप उसको पूछो, ठीक है, मैंने जो करना था मैंने कर लिया. Yeah. Last question. In 2020, you wrote on Twitter, 11 December 2008, I faced the camera for the first time. See, I told you it was 11 December. Yes, as Arjun Punj for Kitni Mohabbat Hai. I had no idea what life was bringing to me then, and 12 years down, I still don't have an idea. I'm sure I wrote that, yeah. And that I think is awesome. मेरे ख्याल में अगर लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाए या आपको पता हो आपके साथ क्या होने वाला है, pandemic, a lot has changed. Has this perspective of yours changed of being unpredictable, unexpected life? No, I think it's pretty awesome. I stand up and I tell life to throw whatever she wants to throw at me. I'm gonna fall, but I will get up and I'll start walking again. Yeah. I love the fact that I have no idea what I'm gonna do tomorrow. I love the fact that I'm open to new challenges, because I think I get bored of things very easily. Yeah. So I'm always looking at new things, and I like वो similar routine से बंदा boring हो जाता है. You just until unless you stimulate my sensibility, I will not get interested. Yeah. So that's what. So I need something. Throw things at me, and they say throw me in a pack of wolves, and I'll come out as the leader. Yeah. That's my attitude. अब मेरे को फेंको, कहीं भी फेंको, and I will come out successful. It's survivor instinct, as a failure, but I will turn that around, and that's life, that's business, that's life, that's anything. Correct. Yeah. But I can vouch for this. You're a warrior. I'm sure you'll battle everything that comes your way. I hope so.
Thank you so much, Karan. This was a lovely conversation. I got to know so much about ओके, you. तो इंटरव्यू हो गया एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से सॉरी जनाब, मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इसका हाफ पार्ट करके हाफ पे मैंने कहा कि बाद में करेंगे, और फिर आपने हमें याद भी करवाया। तो उस वाले पार्ट में इट वाज लाइक मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक पार्ट, मतलब क्वेश्चंस भी ऐसे थे, कैरियर ओरिएंटेड पार्ट था। लेकिन ये जो लास्ट 8 to 9 मिनट्स हैं, ये था, इट्स काइंड ऑफ पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, उन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया कि मतलब क्यों उन्होंने ये कहा था कि मतलब मेरे पास कोई बात करने के लिए होता, उसके पीछे रीज़न क्या था वो उन्होंने बताया। एंड देन वी गॉट टू नो कि जनाब हाईली एजुकेटेड फैमिली है इनकी। और उसके बाद हमने देखा कि तेजस्वी से इनकी मुलाकात कैसे हुई। वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी। तो ये वही सीन हुए कि इतने सालों से कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, इंडस्ट्री भी है, कॉमन इंडस्ट्री है, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई। और जब मुलाकात हुई तो पहली नज़र में प्यार हो गया और रब ने बना दी जोड़ी। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और ये कपल इसी तरह खुश रहे, आबाद रहे। और इनके जो फैंस हैं वो भी हमें टाइमली इनके बारे में अपडेट करते रहते हैं और हम उस पर रिएक्ट करते रहेंगे। सच नाइस कपल। तो मज़ा आया भाई देख के, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। साथ साथ मैंने बोर तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा बीच में इंटरप्ट कर रहा था मैं, लेकिन क्या करें, वो जो जो थॉट्स माइंड में आ रहे थे मैं बोलता जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।